Hello and welcome to a very special edition of Backstage with Boria with someone, and I will put this on record, with someone I have the deepest of respect for, admiration for, and I've learnt my cricket from him. I've learnt my cricket from two people, Jagmohan Dalmia and Ehsan Mani. Around the turn of the century, many days in his London house, with Jaguda in Calcutta, with Ehsan Bhai in England when I was a student there. So there is a long association. एंड जब मैं उनसे बात किया था तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि देखिए एहसान भाई, हम लोग जब एक साथ बात करेंगे, लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट अ वे फॉरवर्ड. नेगेटिविटी बहुत हो चुका है. कैन इंडिया पाकिस्तान कम टुगेदर? कैन द आईसीसी एंड द पीसीबी कम टुगेदर? कैन द मैच स्टिल हैपन? शुड द मैच स्टिल हैपन? So it will be an interview where we try to find solutions rather than talk problems. Ehsan Mani, thank you very much for joining me, Ehsan bhai. Deep privilege. First things first, do you reckon this can still be solved? Say anything else? Boria, I would like to thank you for inviting me. As you said, we have a long association and a very honest and open relationship. And I respect you very much for the way you conduct yourself in interviews and in your writings. And I have the highest regard for you. So thank you very much. And it's really a privilege to join you today. As coming to the current situation, it's very sad when when one finds that cricket comes to an impasse like this. I'm glad. I'm not aware that of the recent events that you've told me about the potential or possible dialogue between the PCB and the ICC. That's obviously a positive sign. I personally am against any politics coming into the game. And it's not only me. Going back to Mr. Dalmia or before him to Mr. Scindia or Mr. Bindra, there was no question of politics coming into the game. There was only one criteria, कि cricket के लिए क्या बेहतर है? Nothing else. What's good for cricket will be good for everyone. From that standpoint, Ehsan bhai, क्लियरली भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से वर्ल्ड कप में ना खेलना क्रिकेट के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता है. अगर आप आज की डेट में और आप दोनों चेयर, आपने इसके पहले यू हैव हेल्ड बोथ दीज पोजीशंस, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी और चेयरमैन ऑफ आईसीसी एंड चेयरमैन ऑफ द पीसीबी. अगर आज की डेट में आप मोहसिन नकवी के जगह होते या जय शाह के जगह होते, व्हाट वुड हैव एहसान मनी डन to try and solve this crisis, ICC or PCB? देखिए, as ICC chairman, मैं हमेशा डायरेक्टली दूसरे बोर्ड के चेयरमैन से बात करता था, not other people. ये बड़ा जरूरी है. जब एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू डायरेक्टर्स या आईसीसी चेयरमैन और हर एक डायरेक्टर जो आईसीसी का होता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. इंसान फिर खुली तरह बात कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है कि क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, एंड देन यू गो फ्रॉम देयर. यू आइडेंटिफाइड द इशू, यू सी के रेड लाइंस कहाँ आती हैं, एंड यू फाइंड अ वे अराउंड इट. आज तक इन ऑल माई टाइम विद आईसीसी एंड इवन विद चेयरमैन ऑफ पीसीबी, आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद इंडिया or with any other country, because if there was a problem, it was my responsibility as the president and chairman of ICC, because I had the responsibility to act in the best interest for all the members. There was not us and them. So if I take this, आपने जो अभी कहा कि you did not have a problem with India, अगर मैं लास्ट 2 साल पहले देखूं, ये दोनों बोर्ड, जो भी उसके पहले हुआ था वो अलग बात है, बट नजम सेठी के समय दोनों बोर्ड ने अग्री किया कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे. इंडिया दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान जब खेलेगा वो कोलंबो में खेलेगा. इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी दुबई जाके खेला, उसके बाद पाकिस्तान विमेन्स टीम कोलंबो में आके वर्ल्ड कप खेला. तो क्या हुआ इस बार कि आप सिलेक्टिवली एक मैच, और आप अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ जिम्बाब्वे में खेल चुके हो, उसी दिन आपने अनाउंस कर दिया कि चलो जी हम ये मैच नहीं खेलेंगे. From
had you been PCB, would you have said, no, this is not a fair call? Or would you have looked at things differently? Would you have done things differently? What would Ehsan Mani have done? देखिए, ये जो फैसला किया पीसीबी ने, ये आया आफ्टर अ नंबर ऑफ इवेंट्स जो उससे पहले हुए थे. वो बांग्लादेश का सिचुएशन था विच प्रीएम्प्टेड इट. वहाँ आई फील कि एज चेयरमैन आईसीसी I would have tried to find a solution. You don't want to throw any member out of the tournament. उसे पीसीबी ने उस पर स्टैंड लिया है. आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो स्टैंड नहीं लेते और बात करते आपस में. इसमें कोई शक नहीं है मेरे सोच में कि पीपल शुड बी टॉकिंग एंड स्पीकिंग, नॉट थ्रेटनिंग और टेकिंग एक्शंस. मगर ये दोनों तरफ से होना चाहिए था. एंड फ्रैंकली जब मिस्टर जय शाह ने ये और आईसीसी ने फैसला किया, ये यूनानिमस था आईसीसी में अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. सो obviously one should accept the decision of the board. Magar PCB strongly feels or has felt कि ये unfair था, political था, whatever. So उसी वक्त it should have been nipped in the bud, and Mr. Shah and Mr. Naqvi should have spoken. इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता. ये डायरेक्टली इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए थी टू फाइंड अ सोल्यूशन. वो नहीं हुआ. एंड आई थिंक इज पार्टली it was mainly a reaction and possibly a little frustration that PCB took this step because they were being ignored. So, whatever the reason, Ehsan bhai, and we know, I mean, a lot of people are saying that Bangladesh का election आ रहा है, South Asia का geopolitics का भी इस पे influence है. वो सब मैं छोड़ के अगर मैं आगे देखूं, today is the 7th when you and I are recording this interview. मैच 7 दिन बाद होने वाला है. श्रीलंकन बोर्ड ने भी, आपने देखा है, एक चिट्ठी लिखा है, जो चिट्ठी हमने पढ़ा भी है. और आपके समय भी साउथ एशिया एक यूनाइटेड ब्लॉक था. जगुदा, आप, श्रीलंका, हमने देखा है. एंड ऐसा तो नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में तब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे. हमने कारगिल में लड़ाई भी किया है. 1999 2000 उसी समय आप लोगों ने आईसीसी में यूनाइटेड थे. आप लोग 90s, अर्ली 90s में कश्मीर इंसर्जेंसी चल रहा था, तब भी आईसीसी में इंडिया पाकिस्तान पुट ऑन अ यूनाइटेड फ्रंट. सो मेरा सवाल यह है कि जब मान लीजिए श्रीलंकन बोर्ड इज रिक्वेस्टिंग पीसीबी कि देखिए जी, जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम था हम लोगों ने हेल्प किया, हमारे यहाँ पे टूरिज्म इंपैक्ट हो जाएगा, हॉस्पिटैलिटी इंपैक्ट हो जाएगा, फैंडम इंपैक्ट हो जाएगा, आप प्लीज बॉयकॉट मत कीजिए. What would be your thing to such an appeal from another member board who is also a partner? With respect to Sri Lanka वही करेगा जो BCCI उसको कहेगा. This is the geopolitical reality of today. अगर किसी को बात करनी चाहिए थी पीसीबी से या रीच आउट करना चाहिए था, वो चेयरमैन आईसीसी था. मेरे टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स थे इस किस्म के. मिस्टर दालमिया के टाइम में भी थे. फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि इंग्लैंड और जिम्बाब्वे का बहुत सख्त प्रॉब्लम था, बिकॉज मिस्टर मुगाबे वो वाइट सेटलर्स की ज़मीन ले रहे थे. आई इंटरवीन्ड. मैंने इंग्लैंड कह रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यू थी कि हम जिम्बाब्वेंस को इंग्लैंड नहीं आने देंगे. आई स्टेप्ड इन एंड आई सेड कि देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर. वी आर देयर टू promote cricket and protect cricket. You are bringing politics into it. If it's a political decision, then your government has to make a clear call. ये कोई ब्यूरोक्रेट से कि हम वीज़ा नहीं देंगे, ऐसे दिस इज अनएक्सेप्टेबल. और इससे जो इंग्लैंड आईसीसी इवेंट्स होल्ड कर रहा था इसके बाद, वो नहीं होंगे इंग्लैंड में. दे गॉट द मैसेज, दे पुल्ड बैक. जब इंग्लैंड टीम जिम्बाब्वे गई, वेरी रिलक्टेंटली, आई वेंट विद देम टू शो देम कि देखो, यू आर सेफ, आईसीसी हैज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम आपके साथ हैं.
So, ये छोटी छोटी बातें होती हैं which make a big difference in signaling. And I feel मुझे अफसोस है, and it's very sad कि the chairmen of the two entities, यानी PCB and ICC, ने आपस में बात नहीं कर रहे. I can never imagine a situation like this कि जहाँ जागू involved नहीं होते from the beginning. And he was the master absolutely in finding solutions. मगर वो एक कहते हैं ना कि विल होना चाहिए कि सोल्यूशन, you respect everyone but you have to find a solution. Political considerations जो मुल्क के आपस के हालात हैं, that should never come into cricket. हमने तो वही देखा है एहसान भाई कि वही आ रहा है. आपने बांग्लादेश वाला मसला का जिक्र किया. मैं ना ये मुस्तफिजुर वाला मामला में डिफेंड कर रहा हूं, बट मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर वो मसला आप उसके बाद जो हमने देखा एस्केलेशन, आपने आईसीसी पे थोप दिया. आपको बीसीसीआई से लड़ाई करना है आप कर लीजिए, बट वो वर्ल्ड कप हम नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप से हम विड्रॉ कर लेंगे. आई वुड से आईसीसी ट्राइड टू काइंड ऑफ डेलीगेशन भेजना या रिक्वेस्ट करना या डायलॉग हुआ था. आपका झगड़ा बीसीसीआई से है, आप रैली करो आईसीसी में, जो भी हुआ है, जो आप कह रहे हो. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम, do you think, being a former chairman of PCB, you know Pakistan politics well, you know ICC politics well, do you have hope that the match can go on? Because in all of this, if I am an ordinary fan, Ehsan bhai, I feel cheated. There are fans who have made flight bookings. They will not get the money back. They have made hotel bookings, and I know hotels in Sri Lanka are saying we will not refund the money because this money is now paid for. These are non-refundable bookings. So you're talking about ordinary cricket fan who is at the center of this whole problem and who are losing out because two institutions are fighting here. The fan has to be protected. Hassan bhai? With respect, it comes back to the Bangladesh issue, because ICC ने उन्हें हटा दिया ना from the tournament, and PCB ने immediately अपनी unhappiness उस पर voice की. उसी वक्त ICC को reach out करना चाहिए था PCB के साथ, and उनसे बात करनी चाहिए थी. जहाँ तक मुझे पता है, there was no discussion at all between PCB and ICC. So that was one failing on both sides. PCB should have reached out to ICC, to the chairman, and the chairman of ICC should have reached out to Pakistan. जब आप कारगिल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट को 4-5 साल के लिए बंद हो गया था. इनफैक्ट ज़्यादा, about 7 years. मैं इंडिया गया था. I met with the government. I met with Mr. Chidambaram. I met with Jaswant Singh and others with the support of BCCI. जब मैं मीटिंग में जाता था तो राज सिंह जाते थे मेरे साथ या मिस्टर दालमिया जाते थे. And we used to say to them कि देखें, क्रिकेट पर यह असर नहीं होना चाहिए. हम सिर्फ क्रिकेट के लिए आए हैं. We are not saying who's right, who's wrong. And in fairness to the Indian government, उन्होंने मुझे कहा कि give us a year और फिर हम इसको sort out करेंगे. उनकी तरफ से आया ये suggestion. And उसके बाद 2004 में there was a Indian tour to Pakistan, which was an outstanding success. उसके बाद Pakistan India गया. People to people contact is the most important thing. और वो हमने बार-बार देखा है between the countries that the people get on very well together. We have the same cultural background. And the big problem, जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि अगर लोग आपस में बात करना छोड़ दें. I would say this again, कि you identify sensitive issues as a chairman of ICC. You see किसके problem है और आप उनसे बात करिए. This I learned from Mr. Dalmia. He didn't care whether he liked the person or not. He would always be in touch with and solving the problem. वो initiative ICC को लेना चाहिए था, PCB को लेना चाहिए था. They should have spoken to each other.
अगर हम लोग आपस में बात करेंगे, बैठ के खाना पिएंगे, खाना साथ खाएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वी कम अवे विद सम रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. क्या वो ये वो प्रॉब्लम कहीं हो गायब जाता हो है गया. एहसान भाई when say, and again no blame, because this is not a discussion where either you or I are putting the blame on anyone. क्या नो. ये प्रॉब्लम हो जाता है that when Naqvi साहब for example is the interior affairs minister, it is difficult to separate the geopolitics from the cricket. आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, जबुदा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, सो आप लोगों के लिए वो शायद relatively easier था compared to what it is for Mr. Naqvi, because he's also the interior affairs minister. Is that a difficult position for him to be in? पाकिस्तान में इट्स लुक्ड एज के जो आईसीसी प्रेसिडेंट हैं, हिज फादर इज नंबर 2 इन द कंट्री इफेक्टिवली पॉलिटिकली. मगर देखें, अगर पॉलिटिशियंस को भी क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, शरद पवार आफ्टर ऑल was a very strong political figure in India. उनके साथ I had the most superb relationship. He gave me, so much time and respect and love. I can't even articulate it. इसी तरह Mr. Scindia was in the government. ये problems नहीं हुए थे. So I think in this case, I feel कि ICC को immediately PCB से बात करनी चाहिए थी. मैं PCB ने discontent शो की, उनको इग्नोर कर दिया गया. वो बोलते रहे, चलाते रहे. तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, हमारी कोई बात सुन रहा है. They reacted, which is wrong. I feel कि PCB को भी रीच आउट करना चाहिए था to the ICC Chairman. क्योंकि जब तक हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, we will not solve the problems. So ठीक clearly है, what you are saying that ICC and PCB should have been in dialogue. आपने multiple times ये कहा है. अगर मैं last 10 मिनट यही सवाल आपसे पूछूं एहसान भाई, that we still have 7 days. Can we salvage? क्या आप देख रहे हो sitting today as a statesman of world cricket कि ये मामला, ये मसला, हम लोग इसका solution निकाल सकते हैं, और 15 फरवरी को ये दोनों टीमें श्रीलंका में खेल रहा है. क्या आप ये देख रहे हो कि is it a bridge too far? ये देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, मगर सही लेवल पर बात होनी चाहिए. मुझे नहीं पता कि पीसीबी से या आईसीसी से कौन बात कर रहा है पीसीबी के साथ. फ्रैंकली ये डिसीशंस, ये डिस्कशंस शुड बी चेयरमैन टू चेयरमैन, क्योंकि फैसला वही होना है. You would never find Mr. Dalmia sending some junior director to talk to someone. तो मैं बिल्कुल नहीं करता था. Problem था, I would talk to the other countries. इसके लिए when I wanted Pakistan-India cricket to restart, I came to India. Listen to the issues with Pakistan. मैं सुन लिए बिल्कुल. I said okay, मगर then I went and spoke to the Pakistan government, listened to their issues. And we narrowed down कि जहाँ तक क्रिकेट का मसला था, how we could play against each other. तो इसमें प्रॉब्लम इसमें ये था कि देखिए, and by the way, I understand as a rational individual that there are political problems. Neither you nor I can distance ourselves, and हम लोग ये जानते हैं. Having said that, स्टैंड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. आपने जिस दिन बोला कि हम इंडिया के साथ ये वर्ल्ड कप मेंस मैच नहीं खेलेंगे, आपने उसी दिन अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच जिम्बाब्वे में खेल लिया. आपने डिसाइड कर लिया कि थाईलैंड में हम विमेंस मैचेस खेल लेंगे. तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक मैच सिलेक्टिवली क्यों इसको आप पकड़ रहे हो. इज इट बिकॉज ऑफ द कमर्शियल वैल्यू ऑफ दिस मैच, और व्हाई? बिकॉज अदरवाइज आई डोंट गेट इट. यू डोंट वांट टू प्ले इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, फेयर. If you don't want to play the women, fair, but your women's team has come and played. The same day, 15th February, you are playing in Thailand. You've played the under 19 in Zimbabwe, but you do not want to play India in the World Cup. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है from the perspective of Pakistan. Do you think there is an inconsistency, or do you think no, this India men's game, because of its commercial value, allows the PCB to make an example? Okay. It comes down to a lack of mutual respect. अगर ये लोग आपस में बात कर रहे होते, ये नहीं होता. They would have found a solution.
Again, वो ये भी नहीं मैं कहूँगा कि who's right, who's wrong, but recent time, past में there have been a number of issues जिससे ये situation was getting bad. The refusal of the Indian players to shake hands with the Pakistani players, the refusal of the Indian team to accept a trophy from the PCB chairman. So obviously, at a personal level, this must affect the judgment of the people making the decisions. ICC didn't step in. There's something called spirit of cricket. वो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं. Because the game comes first, respect for the opponent comes first. और यहाँ भी for the sake of cricket, सबसे बड़ा problem, if you're honest, इसके cricket में politics आ गई हैं दोनों तरफ से, और इससे नुकसान हो रहा है cricket को. There was never a situation कि we let politics come into the game in the past. अब वो आ रहा है. It's a very dangerous situation. मैं कोई 1 साल पहले मैंने इंग्लिश चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से बात की थी, एंड आई सेड टू देम कि देखो, यू हैव टू सॉर्ट आउट द गवर्नेंस ऑफ द आईसीसी. आपके पास बोर्ड में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है. जो डायरेक्टर्स आते हैं आईसीसी मीटिंग में वो अपने बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आई फेस द सेम चैलेंज, एंड सो डिड द अदर्स बिफोर मी एंड आफ्टर मी. And what we had to do was, certainly I would always tell people कि देखो, यहाँ हम लोग आए हैं वर्ल्ड क्रिकेट डिस्कस करने के लिए. Our responsibility is to act in the best interest of the game, not what's in the best interest of Pakistan or Zimbabwe or England or Australia, but जो हम लोगों ने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए करना है. वो लाइन्स अब मर्ज हो गई हैं और उससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है. एंड मैंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ये बात की थी. ही सेड कि हाँ, आई एग्री विद यू कि वी हैव टू सॉर्ट आवर गवर्नेंस आउट. वो आज तक, उसके बाद ही नेवर केम बैक टू मी. ऑब्वियसली देयर वाज रेजिस्टेंस विद एन आईसीसी कि नहीं इसी तरह चलने दो. सो यू कैन हाइड द प्रॉब्लम्स, बट यू कांट अनलेस यू डील विद देम. तो फंडामेंटली दे विल कीप रीइमर्जिंग, और वो नुकसान है आज. Ehsan bhai, when you were chairman, the England Zimbabwe thing happened during the World Cup. हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं that and you sort of were part of that. You just mentioned that as well. So if Pakistan selectively doesn't play this one game, we have heard there are legal issues, there are financial issues, commercial issues, etc., etc. What can tangibly happen? Is it a case of force majeure, like we are hearing that Pakistan will invoke? Can the ICC say, no, it's not? Selectively, you can't do it. Do you sort of see this cascading to becoming a legal issue at CAS? What is the end point? Do you see an end point in this whole story? देखिए, इसमें the only loser will be the game. Because Pakistan will cite, as you said, force majeure, the same as India cited when refusing to play their matches in Pakistan. They'll say government instructions, we cannot go against them. Pakistan भी वही कहेगा ना. They will not. That precedent is already there. ठीक है, lawyers will get together and try and find holes in each other's arguments. मगर उससे फायदा किसको है? Not to the game. It will just harden the relationship between the countries even more. Which will not help the game. मैं आपसे एकदम सहमत हूं इस बात पे एहसान भाई कि अल्टीमेटली इफ ये अगर हार्डन स्टांस और हो जाता है तो गेम विल बी द लूजर. और इसीलिए मैं बार बार यही सवाल पे आ जाता हूं कि 7 दिन हमारे पास है. ये 7 दिन में क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं तो इसी रास्ते हम लोग जा रहे हैं दैट द लूजर विल बी क्रिकेट. द लूजर फॉर व्हाटएवर रीजन, the loser will be cricket. India will say हमारे पास पैसा है जी, हम कम lose करेंगे, somebody else will lose more, but the loser is cricket. Let's face it. Now that's why I'm saying that in this matter now that the Prime Minister has said that we won't play, but I'm still hearing there is a possibility of a dialogue. You know the country, Ehsan bhai, you've been the chairman of PCB. If after the PM has said, can there still be a U-turn, and can there be dialogue, and can there be a solution? Can we, and I'm asking this as an ordinary cricket fan now, can we hope
there any optimism or hope left? In my opinion, I would not hold too much hope, to be honest, unless the discussions are at the highest level. I would have liked to have seen Mr. Jay Shah make the gesture of saying, I will come to Pakistan, we need to solve this out. I'm the chairman of the ICC, and meet with not only Mr. Naqvi, but with the government. मैंने यही किया था ना. I met the ministers in India who were relevant, and it was such a pleasure to. I think Mr. Sunil Dutt was then the Minister of Sport. मुझे कहा गया था कि he will give you half an hour. I said, ठीक है, that's more than enough. So I went and met him. He met me with such love and affection. He spent 2 hours with me. His secretary kept trying to remind him that he had another meeting. He kept waving her away. Because we found so much in common to discuss, and his origins were from Jhelum in Pakistan. And so he was very nostalgic, and we got on very, very well. But the thing was, ये जो people to people contact होता है ना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है. So they're talking is a great thing. If there's goodwill on both sides, they should find a solution. Magar, I would say that it should not be anyone else but the chairman of PCB, the chairman of ICC, and whoever else is involved at that level. Sending just an emissary from, one of the other board members, who I don't think will work. Because what will happen, he'll bring us message, PCB will give a message back, उसी में निकल जाएंगे 7-8 दिन. ये face-to-face meeting होती है तो उसी बात you sit down and you say कि यार starting points we have to find a solution. I think that's the thing, and that's what I said to you offline. From what I've heard, that the two institutions, the ICC and PCB, are on the negotiating table. I think the PCB has reached out, which is great. I don't know if ICC has reached out. If that's the case, that's equally great. But both institutions are talking, and until and unless you talk, there is no solution. There is no ego here. Ultimately, the game has to be respected as its most important objective. So I'll end there, Ehsan Mani. Thank you very much for your time. The message that I'm taking away is one can still be optimistic. Difficult, but optimistic. The glass is, for me, always half full rather than half empty. And that's why I decided to do this interview with you. Thank you, Ehsan Bhai. You've been great for world cricket. I hope you can continue to give your words of wisdom and instill some sense so that the game kind of survives and goes forward in the healthy manner. Thank you very much for your time. Thank you, Boria.